Well, ladies and gentlemen, next up we're going to shift our focus to another gruesome case that, well, irked the entire nation. There was national ire because of this case. Now, the Bombay High Court, and this is the latest that we're picking up vis-a-vis the Pune Porsche case. The Bombay High Court has granted bail to the juvenile accused in the Pune car accident case. Ashok Bagria continues to be with us on the broadcast here. The victims, relatives, Ashok, have been constantly saying, look at the kids' actions, not his age. There are special, cases where juveniles have been tried as adults as well. And this juvenile as well, 17 years and 8 months, already nearing that 18-year-old threshold. A gruesome case, 2 people dead, a Porsche case, a pub that has been raised, mafia, links that have been established. What are you thinking about right now when you hear that the kid has been granted bail? Well, as far as the Bombay High Court is concerned, the Bombay High Court was dealing with a very narrow question. The question was that a habeas corpus petition was filed in the Bombay High Court by the aunt of the minor. The minor accused the guy who was driving the Porsche on May 19th, which resulted in the death of 2 young IT professionals, and her plea was very specific, saying that the Juvenile Justice Board had released the minor on bail on the first occasion, but a few days later another order was passed by the Juvenile Justice Board cancelling the bail and remanding him to observation home. Now, the question before the Bombay High Court was to look if this was legally permissible and if the Juvenile Justice Board could have taken such a step of cancelling the bail of the accused minor and sending him back to the observation home once a bail had been granted to him. To which the Bombay High Court today has said that, look, there is no such powers vested with the Juvenile Justice Board to cancel the bail which has once been granted to the juvenile, and this was an extra legal exercise of power by the Juvenile Justice Board. It needs to be set aside. The juvenile accused has been released from the observation home, has been sent into the custody of his aunt who had filed this petition in the Bombay High Court, and has also directed that his consultation with the psychologist, as has been happening for the last few weeks, will continue. So, what is really happening in this Pune Porsche case, Kabir, is the fact that there has been too much outrage, public outrage. The manner in which this unfortunate incident took place on the streets of Pune. People have been crying for justice, and in fact, the juvenile who is an accused in this case, the family members of the juvenile have been trying their best to influence the witnesses as well as tamper with the evidence, just to show that how the high and mighty in the society can have their way. Now, but in this whole process, what has been happening is that the juvenile accused has been illegally sent to the observation home. Ultimately, he will continue to be treated as a juvenile till the trial court does not decide that he can be tried as an adult. But until and unless that finding comes, he will be treated as a juvenile only, which the Pune police forgot in their zeal, and they defended the bail, the cancellation of bail and sending of the juvenile accused back to the remand home in the Bombay High Court, and they cited instances which followed the accident on the part of the family members of the juvenile who tried to tamper with the evidence.
And amidst all of this, this aunt that you're talking about comes as a saving grace for the boy, who's gone in the Bombay High Court and said that yes, there was trauma, people have died, but the boy was going through trauma himself. Now we're learning that he's with the aunt at this point in time. At the moment, he's in the observation home because this order of the Bombay High Court was just dictated some 10-15 minutes back. So what the court has really done is that the court has said that please set him free from the observation home. Right. Let him go back to the care and observation of his aunt who has filed this application, and in the meantime, the psychological treatment that he's been getting or the psychological consultation or counseling that he's been receiving will continue. All right. Rajiv Singh, our colleague from TV9 joins us on the broadcast here. Rajiv, क्या कुछ बता सकते हैं आप? ग्राउंड डेवलपमेंट्स क्या है? मैनिपुलेशन किया गया, ब्लड सैंपलिंग का नेशनल आयर देखने को मिला. इस समय ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स क्या हैं? क्या रिहा कर दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन होम से? देखिए, अभी रिहा नहीं किए गए हैं. निश्चित तौर पर जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट का ऑर्डर जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपा जाएगा और उसके बाद रिहा करने का प्रोसेस शुरू होगा. लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर, बहुत साफ शब्दों में प्रोसिक्यूशन को इस बात के लिए लताड़ लगाई थी कि एक शख्स को अगर जमानत दे दी गई थी तो बिना जमानत को कैंसिल किए उसे दोबारा कैसे कस्टडी में ले सकते हैं, दोबारा उसे जुवेनाइल एक्ट के तहत उसको दोबारा जेल में डाल सकते हैं. तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो आदेश आया था कि दोबारा कस्टडी में लेकर उस ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, ये टेक्निकली कहीं ना कहीं गलती हुई है और उसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट से ये जमानत मिली है नाबालिग को. तो बेसिकली टेक्निकल लूपहोल की वजह से अभी इनको जमानत मिल रही है. बिल्कुल, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कस्टडी में रखना था, ऑब्जर्वेशन में रखना था, तो जो पहले जमानत दी गई थी उस जमानत को कैंसिल नहीं की गई है, दोबारा कस्टडी में लिया गया और दोबारा ऑब्जर्वेशन के लिए जुवेनाइल रिमांड होम में रखा गया. टेक्निकली कहीं ना कहीं पुणे पुलिस की तरफ से और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से इस मामले में गलती हुई है. निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस पूरे मामले में शुरुआत से सवाल उठते रहे और ये मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब नाबालिग आरोपी के रिहा होने के बाद में दोबारा पुणे पुलिस को निश्चित तौर पर ये सवाल किया जाएगा कि उन्होंने पहले बेल जो मिली थी उसको कैंसिल कराना चाहिए था कोर्ट से और उसके बाद इस पूरे मामले में दोबारा आरोपी को कस्टडी में लेना चाहिए था. राजीव हमारे साथ जुड़े रहिए. लॉयर्स रिएक्शन ऑन योर स्क्रीन्स नेक्स्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन. यांनी एक रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस फाईल केली होती ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट समोर. ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टने याच्यावरती दोन्ही बाजू ऐकल्या. प्रॉसिक्युशननी अग्रेसिव्हली विरोध केला. रिट पिटिशन ऑफ हिबिस कॉर्पसचा मेन जो स्केलेटन होता तो सेक्शन 12 जुवेनाइल जस्टिस ऍक्ट याच्याप्रमाणे कुठल्याही चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉला इलिगली डिटेन करता येत नाही, या बेसिसवरती आम्ही रिट पिटिशन फाईल केली होती. आज ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ याला रिलीज करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि आदेशामध्ये स्पेसिफिकली असं आलेलं आहे की 22 मे 2024, 5 जून 2024 आणि 12 जून 2024च्या ज्या ऑर्डर्स आहेत जुवेनाइल जस्टिस बोर्डच्या, ज्याच्यामध्ये जुवेनाइलला डिटेन करण्यात आलं होतं, त्या इलिगल आहेत, एक्सपेशली इलिगल आहेत आणि म्हणून त्या सेट असाइड झालेल्या आहेत. तात्काळ सोडण्यात येईल अशी immediately ताब्यात राहील. he has to be released immediately and he has to be in the custody of paternal aunt. जेव्हा सुटकेचा निर्देश दिला तेव्हा मुलाची कस्टडी कोणाकडे जाणार असा प्रश्न इकडे उपस्थित करण्यात आला. पुण्याबाहेर जाऊ शकतो का? सुटकेचा निर्णय झाल्यानंतर सरकार पक्षाकडनं एक ऑब्जेक्शन आलं की त्याला कोणाच्या कस्टडीमध्ये देण्यात यावं. तो ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्टने ते क्लॅरिफाय केलेलं आहे की याचिकाकर्ता जी पॅटर्नल आंट आहे त्यांच्या कस्टडीत जुवेनाइलला देण्यात यावे. त्याला पुण्याच्या बाहेर जाता येईल का? पाटील साहेब, त्याला पुण्याच्या बाहेर जाता येईल का? कोर्टाने काय आपलं मत मांडलं? राजीव सिंह कंटिन्यूज टू बी विद अस. राजीव, साथ ही साथ ये भी बताइए कि जिस प्रकार का राष्ट्रीय आक्रोश हमको देखने को मिला इस एक्सीडेंट के बाद, अब जो कि ये नाबालिग को जमानत मिल चुकी है, ऑन ग्राउंड सेंटिमेंट क्या है, लोग क्या कह रहे हैं इस समय? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही जो विक्टिम परिवार था उन्होंने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री ने उसके बाद खुद पुणे पुलिस कमिश्नर को फोन करके आदेश दिया था कि इस पूरे मामले में बहुत बारीकी से पूरे केस को
देखा जाए और साथ साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए। आरोपी को कड़ी सजा मिली, उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन भी दिया था। जहां तक लोगों की बात है, हमने पुणे में इस घटना के बाद देखा कि किस तरह से लोगों का आक्रोश था। लोग सड़कों पर निकलकर कैंडल जला रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। यहाँ तक कि उस पब में भी तोड़फोड़ की गई, पब को सीज कर दिया बाद में गवर्नमेंट ने। लेकिन इस पूरे मामले में अब पुणे पुलिस आगे क्या करेगी? क्या जो पहली बार जमानत मिली थी उस जमानत को कैंसिल कराने के लिए पुणे पुलिस नए सिरे से कोर्ट जाएगी और वापस से ये कोशिश रहेगी कि उनको, क्योंकि उन्होंने जो उस वक्त हवाला दिया था कि अगर लड़का जो है वो कस्टडी में रहेगा, ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है और इस पूरे मामले में जो एविडेंसेस है वो टेम्पर हो सकता है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में ये बात निकलकर सामने आई किस तरह से 3 पीढ़ी इस पूरी घटना के बाद में एविडेंसेस को और जो विटनेसेस थे, जो आरोपी थे, उन तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, ब्राइबरी दी गई, रिश्वत दी गई और चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को। तो इस पूरे मामले में ये आधार बनाया गया था। ऐसे में उस जुवेनाइल आरोपी को जो है कस्टडी में लिया गया था। लेकिन अब पुणे पुलिस का क्या रवैया रहेगा, ये देखने वाली बात है। Bilkul, absolutely. That's what we're picking up at this point in time, ladies and gentlemen. In the Pune Porsche case, the accused minor has got a bail. He's going to be leaving the observation home. What has been cited is a technical glitch at this point in time. The paternal aunt of the minor had approached the High Court alleging unlawful detention of the minor in an observation home. Just last week, Justices Bharati Dangre and Manjusha Deshpande, they observed that remanding the minor to an observation home after granting bail nullifies the purpose of the bail. 2 people have lost their lives. There was trauma, but the child, Juvenile, was also in trauma. This was observed by the court. Rajiv Singh, many thanks for joining with us and helping us out with the latest details. We're going to slip into a quick commercial break here, but on the other side, big relief for actress Sanjana Galrani and realtor Shiv Prakash Chippy from Sandalwood sector. The news coming your way. Don't go anywhere.